Hello guys, welcome to my channel. I am back with some previous year questions related to your UGC NET Environmental Sciences paper 2. So let us start with this video. The first question is, the most toxic among chlorinated hydrocarbons is? Chlorinated hydrocarbons में सबसे ज़्यादा toxic कौन है? So the options are aldrin, DDT, endrin and hepatochlor. So endrin is the most toxic among the chlorinated hydrocarbons. Okay, so the answer is endrin. Now, reverse osmosis operated at 200 to 1200 psig, which is pound force per square inch. Okay, that is the unit. Removes particles ranging from, इसमें ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इन विच ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस ऑपरेट हो रहा है 200 टू 1200 psig पर, वो कितने रेंज के पार्टिकल्स को रिमूव कर रहा है? सो द रेंज हैज बीन गिवन इन ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. Agent Orange is a. I hope you all know about the Agent Orange. It was used by the US military forces during the Vietnamese War in 1961 to 1967. So the Vietnamese War lasted for around a decade, starting from 1961 to 1971. During that time, the US military forces used Agent Orange, which is particularly a weedicide. Okay, it had really very severe effects on the population as well of human beings as well as on the plants. So Agent Orange is basically a mixture of 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, which are also known as 2,4,5T plus 2,4D. ओके, तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है दैट इज नोन एज एजेंट ऑरेंज, विच इज अ वीडिसाइड विच वॉज यूज्ड बाय द यूएस मिलिट्री फोर्सेस ड्यूरिंग द वियतनामीज वॉर फ्रॉम 1961 to 1971. Coagulation is a chemical process in which charged particles or colloids undergo. So coagulation के अंदर basically क्या हो रहा है? Coagulation is a process during which smaller particles come together and form a bigger particle having a bigger mass. So that is the process of destabilization. Destabilization is the process that is occurring during the coagulation, during which smaller particles come together and they form a larger particle, so that they can be separated very easily. Okay, they usually they form a sediment or they can be precipitated, whatever the process is. Okay, means whatever the requirement of the process is, whatever the process how the chemicals are used, that will decide that it would be a precipitate or it will settle down as a sediment. So basically the process during the coagulation is destabilization. मेजर सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स होता है वोल्केनिक एक्टिविटी. ओके, वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड व्हेन द वोल्केनो इरप्ट्स. ओके, सो दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ SO2. Blue baby syndrome is caused by, I hope you all know about the blue baby syndrome, how it is caused and which chemical is responsible for it. So the answer is nitrate over here. Nitrate is responsible for the blue baby syndrome. Now we have an assertion and reason. State factors control the overall structure of an ecosystem and the way things work in it. ठीक है, जो भी external factors हैं उनको state factors बोला जाता है. They control the overall structure of an ecosystem and the way things work within it. Okay, this is a true thing. Reason says the state factors are not themselves influenced by the ecosystem. Now whatever the state factors are, they are not only influenced by the ecosystem, they are influenced by several other factors. ठीक है, तो दोनों चीज़ें सही हैं, बट जो आपका रीज़न है इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग हाउ द स्टेट फैक्टर्स कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. वो तो ये बता रहा है कि स्टेट फैक्टर्स किससे इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, तो दिस आंसर ओवर हियर इज assertion and reason both are true, but the reason is not the correct explanation for the assertion given. So answer B is the correct code over here.
Again, we have an assertion says when energy is transferred between trophic levels, the successive level in the pathway have lesser available energy compared to the preceding level. तो जो सक्सेसिव लेवल है, जो आगे वाला लेवल है, उसके पास लेस अवेलेबल एनर्जी होगी एज पर द 10% रूल. ठीक है, 10% रूल के अकॉर्डिंग 90% एनर्जी जो एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर है वो कंज्यूम हो जाती है या रिलीज हो जाती है एज हीट, या कोई भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चली गई या मेटाबॉलिज्म में चली गई, जिसकी वजह से सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जो होती है वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल को पास की जाती है. तो when the energy is transferred between trophic levels, the successive level in the pathway have lesser available energy compared to the preceding level. This is a true thing. Reason says whenever energy is transformed, there is a loss of energy through the release of heat. This is not a correct explanation. क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, देर इज लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू द रिलीज ऑफ हीट. ओके, ऐसा होता है, बट सिर्फ रिलीज ऑफ ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि किस तरह से कम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, ये से बता रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी जो हो रही है रिलीज ऑफ हीट की वजह से हो रही है, पर केवल रिलीज ऑफ हीट की वजह से नहीं होती, और भी प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से प्रीसीडिंग जो लेवल है ट्रॉफिक लेवल, उसकी एनर्जी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे आपके असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, बट जो आपका रीज़न दिया गया है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन गिवन. सो द आंसर बी इज द करेक्ट कोड ओवर हियर. Now we have one more assertion reason in which assertion says the ecosystem surrounding a river gets damaged due to the construction of a dam. Okay, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जब भी होता है तो जो भी रिवर के आसपास का इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ये हम सबको पता है. ठीक है, अब रीजन ये बोलता है द एरिया गेट्स इनुंडेटेड विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. दिस इज वन पॉइंट. ये बात भी सही है, पर ये सिर्फ एक ही बात है. इसमें ये नहीं बताया गया कि हैबिटेट लॉस हो जाती है, वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं या लोग रह रहे होते हैं उनकी हैबिटेट लॉस हो जाती है. they have to shift from their area, because of which many species become extinct because their natural habitat has been destroyed. After that, there are other things also. There can be you are making a dam and you are digging very deep in the earth, so there are chances that there can be landslides in the nearby areas. Okay, there are many hazards that are coming with the construction of a dam. So it is not only that it would be inundated with large volume of water, there are several other reasons to this assertion. So here assertion and reason are both true. ठीक है, दोनों चीज़ें true हैं, but जो आपका reason है it is not explaining the assertion given. So the answer B is the correct code over here also. So that's all for this video. I hope you have understood the questions that I have discussed, and I hope your preparation is going really very well. If you have any doubts related to any question or any video on my channel, you are free to ask me in the comment box. And please like this video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Press the bell icon for everyday updates. Thank you very much for watching.